Good morning, student. Today our topic is the benefit and the challenges in the molecular manufacture. ये आज हमारा टॉपिक है बेनिफिट एंड द चैलेंजेस इन द मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. तो इस आर्टिकल में हम क्या हैं उनके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, क्या चैलेंजेस थे मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में. तो नाउ डिस्कस the bottom up approach used in the process of the molecular manufacturing play important role in the fabrications and the processing of the nanostructures and the nanomaterial. यानी कि एक प्रोसेस है जो हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल है इस प्रोसेस में किसके, नैनो स्ट्रक्चर और नैनो मटेरियल में. दिस अप्रोच गिव्स द बेटर चांस टू द ऑब्टेन द नैनो स्ट्रक्चर्स हैविंग द फॉलोइंग एडवांटेजेस. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट इज द नैनो स्ट्रक्चर विल हैव ए लेस डिफेक्ट. नैनो स्ट्रक्चर विल हैव द more homogeneous chemical composition. Third one is the nanostructures will have better short and long range ordering. Okay. These advantages in the bottom up approach are due to the reduction in the Gibbs free energy, so that the nanostructures and the nanomaterials are in a state closer to a thermodynamic equilibrium state. On the other hand, top down approach introduce the internal stress, surface defect and the contaminations. नाउ चैलेंजेस इन ए नैनो टेक्नोलॉजी. चैलेंजेस हमारे पास क्या हैं टेक्नोलॉजी के अंदर. इन द मॉलिक्यूलर फैक्चरिंग प्रोसेस द रिसर्चेज फेस मेनी चैलेंजेस which are unique to nanostructures and the nanomaterials. The integration of the nanostructures and the nanomaterial into the macroscopic particles system in the abyss system is a big challenge. So new measurement of the techniques need to be developed at the nanometer scale, may require new innovations, and there is a need for the extremely sensitive scale. The system properties like the surface energy, electronic structures, reactivity, ये हमने पहले आर्टिकल में पढ़ा है. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट would change accordingly, and this is due to the fact that on the nano length scale and the surface to volume ratio increases. As a result, the interaction among the atoms also changes, and drastic change in the properties of the material is observed. So while dealing with the nanomaterials, following facts should keep in mind. Now the first point, nanostructure material proposes whose surface energy and the thermodynamically unstable or a unstable, stable or a unstable or a metastable, so it necessary to overcome the surface energy. As one shift from the bulk material to the nanoscale, the electronic structure undergoes a major change. So that means there is the opening of the bands into the clusters having the discrete energy levels. Now next point, as the particle size is reduced and there is a significant shift in the optical absorption spectra, that is there is change in color. Now next point is the doping becomes extremely important at the nanometer scale. Your doping है that is also extremely important for the nanometer scale. Fluctuations of the doping concentrations cannot be tolerated in the nanometer scale because it would lead to the totally different functions of the nano device. Further, self purification of the nanomaterials makes doping very difficult. So, therefore, for the fabrication and the processing of the nanomaterials and the nanostructure, the following changes must be met. First is the overcome the whose surface energy by means of the surface relaxation, surface restricting, surface absorptions, and the impurities enrichment or a composition segregations. Second point, for the desired physical properties, uniform size and the distributions, morphology and the chemical composition must be ensured. Now third point, with the passage of the time, nanomaterials and the nanostructures must be prevented from the coalescing, and this can be done either through the
ऑस्टवाल्ड रेपनिंग और एगोलोमेरेशंस। ये हमारे पास थे बेनिफिट और चैलेंजेस में मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर असेंबल्स कंसेप्ट। इसमें हमारे पास क्या है कि एटम इन द यूनिवर्स as the building blocks for all the matter. Nature has perfected the science of the manufacturing matters molecularly. In fact, the millions of the living cells are assembled in the specific manner to form the human bodies. Cells are nature nanomechanics, and researchers or a scientist still have a lot to learn about the ideas of the constructing material on such a small scale. And the basic idea of the nanotechnology is to manipulate or control each individual atoms or a molecules as we desire. Research have developed techniques like the atomic force microscopy to grab single atoms and move them to desired positions. नाउ द मॉलिकुलर असेंबल्स। मॉलिकुलर असेंबल्स में हमारे पास क्या है, नैनोस्कोपिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू मैनिपुलेट atoms and molecules according to our specification is called the molecular assemble। ये हमारी एक नंबर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, क्या है इसमें, नैनोस्कोपिक मशीन्स दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू मैनिपुलेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग आवर स्पेसिफिकेशन, that is called the molecular assemble. Thousands of years are required for a single assembles to produce any kind of material, taking a single atom at a time. So trillions of the assembles will be needed to develop, produce or a product in a viable time frame. Now molecular manufacturing, the technology that implement digital operations, nanoscale construction of the self manufactures programmable properties and low error rates is called the molecular manufacturing. It is of using the molecular machinery, giving the molecule by molecule control of product and byproduct via positional chemical synthesis. Now there are two basic approach used for the fabrication of the nanostructures. First is the top up approach and second one is the bottom up approach. In the top down approach, we start with a large scale object or a pattern and gradually reduce its dimension. Actually, this approach involves the reductionism and starting with the bulk material and then reduce its size step by step to produce the nanostructures, and this can be accomplished by the technique called the lithography. उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोग्राफी, एंड विच साइंस रेडिएशन थ्रू द टेम्पलेट on a surface coated with radiation sensitive resist, and the resist is then removed and the surface is chemically treated to produce the nanostructures. Some of the frequently used top up down the techniques are, first is the lithograph. Lithograph में क्या है, deep pen lithography, soft lithography, electron beam lithography and deep ultraviolet lithography. Now the second, reactive iron etching and the bell milling. Second approach to the preparation of the nanostructure called the bottom up approach is to collect, consolidate and the fashion individual atoms and molecules into the desired structure, and in this case the material is built up from the button or a atom by atom or molecule by molecule or cluster by cluster. Here, the sequence of the chemical reactions controlled by the catalysts are carried out in biological catalyst called the enzyme assemble into the amino acid and construct the living tissues and form and approach the organs of the बॉडी। ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस है जिसमें हमें क्या है, कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। तो लाइक द सेम वे जो हमारी बायोलॉजी है उसमें कैटालिस्ट को हम एंजाइम के नाम से बोलते हैं। जो एंजाइम्स हैं वो असेंबल करते हैं अमीनो एसिड्स को और वो क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, लिविंग टिश्यू को, और वो फिर
सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड द बॉटम अप टेक्निक्स आर, तो बॉटम टेक्निक्स में हमारे पास क्या है, सोल जेल प्रोसेस, केमिकल वेपर डिपोजिशन यानी कि सीवीडी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, केमिकल वेपर डिपोजिशन की सीवीडी क्या बोलते हैं, एटॉमिक और ए मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, फिर कोलाइडल केमिकल प्रिसिपिटेशंस, फिर गैस फेज कंडेंसेशन प्रोसेस एंड द लेज़र पायरोलिसिस। ये हमारे पास क्या है, बॉटम अप टेक्निक्स हैं। तो पेपर में एक तो हमारे पास ये पूछा सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड द चैलेंजेस इन द मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद हमारे पास है कि मॉलिक्यूलर एंजेम्बल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करिए, या आपकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन में मॉलिक्यूलर एंजेम्बल क्या है, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, या उसके 2 अप्रोच बताइए, बेसिक अप्रोच क्या है फैब्रिकेशन ऑफ द नैनो स्ट्रक्चर के लिए, या फिर आप बता सकते हैं कि गिव सम टेक्निक फॉर द टॉप डाउन टेक्निक, या सम गिव नेम ऑफ द बॉटम अप टेक्निक्स। तो ये हमारे पास ये आज का आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप इसको सुनना, ध्यान से आप इसको पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।